Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in plant breeding. Starting with the first one, that is quantitative characters. वो characters जो कि बहुत ज़्यादा affect होते हैं environment से and एक से ज़्यादा जीन से govern होते हैं. Means characters showing continuous variation and considerable effect of the environment. Next one is quantitative trait is similar to the quantitative character. Next one, QTL, that is quantitative trait locus, a position in chromosome that contains one or more polygenes involved in determination of a quantitative trait. क्वारंटाइन, ये वर्ड से तो हम सब ही भली भांति अवेयर है. सो प्लांट्स और एनिमल्स में भी क्वारंटाइन किया जाता है ताकि कोई डिजीज इधर ना आ जाए. आइसोलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑन वीड्स, डिजीजेस एंड पेस्ट एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ देयर स्प्रेड. क्वारंटाइन रूल्स, ये रूल्स बेसिकली एक प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, दैट इज 40 डेज के अराउंड का होता है कि 40 डेज पहले उसको चेक रखना है. कहीं भी बाहर से आ रहा है तो आपको चेक कराना है, उसके बाद ही वो कंट्री में आ सकता है. Next is random, an event whose occurrence is determined solely by chance and there is no discrimination. Next one is random drift. As we know कि एक population से some of the population जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम लोग drift बोलते हैं. तो random drift क्या होगा? Without selection means randomly एक population से कुछ part कहीं और चला जा रहा है. Now random mating by the word कि कोई rule नहीं है, कहीं पे भी mating हो रहा है, equal chance है एक population में. A system of mating in which an individual has equal chance of mating with every other individual of the same population. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.